Okay. Hello and good evening, guys. This is Tejashri Jagtap, and welcome to our event. Today's event that is Introduction to Web3 Metaverse. In this event, you will be actually getting an idea what Web3 actually is, and without wasting your precious time, let's just introduce you to the speakers of the evening. So please welcome our speakers of the evening, Mr. Nikhil Aparijit, who's from Nagpur, who's a great enthusiast and is passionate about Web3 crypto management and community building. Uh, second, uh, uh, our second speaker of the evening is Mr. Tanmay Tarte, who's a well-known public speaker, a content creator, and a community evangelist at Lumos Labs. We are glad to have you, sir. So I now give the further flow. I now hand over the further floor to Mr. Nikhil Aparijit. Cool. So good to be here. Hi, hello everyone. I can't see the number of people that are there in the chat, but hello, welcome. Uh, so this is like a custom that always happens in every event that I do. Uh, Wherever I am, my name is always messed up. Okay, so my name is Nikhil Aparajit, and I am the community lead at Lumos Labs. I am basically responsible for all the DevRel and community activities that happen on the for the company Lumos Labs. I'll tell you what we do in a very short bit. But today's session is all about intro to Web3 and Metaverse. But before we begin, please be very, very active in the chat. I'm constantly watching the chat. Let me know what you're thinking. Let me know what questions you have in the chat section. And I'll be interacting with you guys throughout the video. And I'll try to be as interactive as possible. इसको जितना हम लोग simplify कर सकते हैं, I'll try to simplify it as much as possible. I know a lot of you are comfortable with English Hindi mix because that's the language I am comfortable in. So I'm going to be a little judicious using my English. I'm going to mix it with a little bit of Hindi. So with that, let's get started. Cool. So I just told you about myself. I am the community lead at Lumos Labs Private Limited. But what I do basically, what Lumos Labs does, Lumos used to be an innovation management company. We used to help global Web3 companies establish their developer relations in India. And now we are pivoting towards building our own metaverse. We are building a metaverse for Web3 enthusiasts, Web3 enthusiasts like you. So pretty exciting stuff that we're doing and very excited to start this day. Hi Aishwarya, hi in the chat, Mr. Cool, hello. Hi Riddhi, good to have you here. And so I'm very excited to do this session. Well, आज हम लोग कुछ चीजें कवर करने वाले हैं. We'll understand first of all the fundamentals of the Web3 space. We'll understand the fundamental concepts of this Web3 space that you need to understand to get started in this world. If you know these fundamentals, you can start building your own projects. You can start learning more, getting more deeper into the tech behind all of this. You will start to understand the hype around all of this technology, because frankly there's a lot of hype, there's a lot of fluff, there's a lot of marketing jargon that is around this technology. तो आज हम उसको थोड़ा simplify करने की कोशिश करेंगे, right? So let's understand with the first topic for the day, that is blockchain. So ये technology का नाम जो है, this has been thrown around like crazy all around, right? People throw the name blockchain like anything. Every technology these days apparently has blockchain, but what exactly is this blockchain? Well, essentially, we store the data, any data that is generated by a user in a program, in the form of rows and columns. That is called structured language, right? So we stored the data in the form of structured language in an SQL format, rows and columns. Well, if you store a data in the form of blocks, in blockchain, essentially we store the data in the form of blocks, right? The database is stored in form of these 1 MB, 2 MB, 10 MB, whichever size blocks. And every block has an address to its previous block. So all of these blocks are interconnected with each other with address to its previous blocks. So all of these blocks kind of form a chain. Because they form a chain, we come to the name blockchain. That's it. That's all you need to know about what blockchain is, right? Now, if I want to, now, this is how typically a blockchain will look like. Like you'll have a block that is of some size, a predefined size, and this new block gets attached to the blockchain.
by a process called as mining. So a block is mined, a transaction is mined on the blockchain, and then the new block gets attached to the pre-existing blockchain, essentially forming a chain of blocks connected together, right? So this is what a blockchain typically looks like. And this is the other term that is usually thrown around very commonly, Web3. बहुत सुना होगा आपने इस टर्म के बारे में, बहुत इसकी हाइप चलती है न्यूज चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे. दिस इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर. व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? Well, Web3 is supposed to be like this next version of internet that that aims to like shift the power from large centralized big tech corporations to its individual users, back to the users, the stakeholders of this ecosystem, that is you and me. So what do I mean by that? Let's understand the let's for this to understand Web3, you have to understand the evolution of internet, right? So let's understand how internet has evolved and how it has become the way it is right now. So this is how traditional internet was in the 90s. So the commercial internet that we use today was launched somewhere back around in the 1990s. This is not the exact date. This is just a like a ballpark amount. So in the year 1990, the internet, as we know, we call it Web 1.0 now. It was like a huge collection of web pages, and these web pages were built in rudimentary HTML technology, right? HTML language. These web pages were built in that, and all you could do is basically go onto these web pages and view the information, read the information. So these big companies could make web pages. You could make a web page, and they would be listed on a search engine like AOL or Bing or Yahoo search. You could search about a certain topic, and you could read that information. Imagine it like a big library, right? A library is a collection of huge amount of books, right? So you go in a library. If you want to read about Pokemon, for example, you go in the kids section, you'll find the particular book that you're looking for, you'll open that book and you'll read the information, and then you'll keep the book there and then go back. So Web 1.0 was essentially like this, a big library of information where you could only read the information, right? The internet was very restrictive. A lot of tech pundits in that era thought कि हाँ internet से क्या ही कर लेंगे लोग, this is all just fancy technology, all hype, no use. But then came the era of 2004 and 2005, जब डॉट कॉम बबल बर्स्ट होने के बाद में, आई थिंक ये स्टोरी काफी पॉपुलर है, डॉट कॉम बबल बर्स्ट. इसेंशियली बहुत सारी कंपनीज ने डॉट कॉम जो थे, मतलब जो वेबसाइट के डोमेन्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया था. इंटरनेट कंपनीज बनाई थी बहुत बड़ी बड़ी, और उनकी वैल्यूएशन डूब गए. तो सारा जो मार्केट था वो क्रैश कर गया. दैट्स द essentially the dot com bubble. But what happened after the dot com bubble is a few strong contenders came out of it. Companies like Google, Amazon, Facebook, Microsoft, also in the web space, came out with huge products where you could not only read the content that was there on the internet, but you could also create the content on the internet. So essentially, जब ये अभी हम लोग इस स्ट्रीम को YouTube पे देख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि मैं कंटेंट लाइव बना रहा हूँ, YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं. मतलब दिस इंटरनेट इज नॉट जस्ट अ रीड ओनली इंटरनेट, दिस इंटरनेट इज अ रीड राइट इंटरनेट. मतलब यहाँ पे कंटेंट मैं बना भी सकता हूँ और कंज्यूम भी कर सकता हूँ. आई कैन लाइक दिस स्ट्रीम, which you should do, by the way, and subscribe to the channel also. And also in the comment section, my team will share a link to the Discord server of Lumos Metaverse. You can obviously join that server and become a part of that family as well. So guys, please do that. But just to be clear, what we are doing here is essentially sharing our opinions. We are writing about the feelings that we have, or about the content that we like on the internet, and we can react to it. I can go ahead on Twitter and tweet about this event or live stream that I'm attending right now, and I can share my opinions with the world, all with a click of a button. So in this age, in this day and age of the internet, I can read the content on the internet, and I can also create the content on the internet. Same on Instagram, right? Instagram content बनाता है या हम content बनाते हैं? हम बनाते हैं, right? So we are the creators of the content on Instagram, on Facebook, on Snapchat, on WhatsApp. All of these platforms gave us the option of creating the internet as we like it. But all of these systems have one fatal flaw. That fatal flaw is centralization. Because we gave too much power to companies like Google, Facebook, Amazon, we have given a lot of power to these companies. If you think about it, like right now, if I upload a picture on Instagram, Instagram knows where the picture was taken, when it was taken, what phone was used, what was the battery percentage of the phone, what operating system the phone runs on,
what security patch level did the run run on, etc. Everything, all the information Instagram has. Instagram is owned by Facebook, now Meta. Now we believe that some of these companies are good, Google, Facebook, Amazon. We believe that these companies are good, and that's why we trust them with some of the information that we provide them. But have you ever noticed that how much information are we giving willingly to these companies that can be exploited? So up until the point that it's showing us relevant ads like buy that shampoo or buy that deodorant, it's fine. What if this information is used to target you? What if this information, this sensitive information about you, say your gender identity, your religious identity, your private information like your phone number or your email address, what if that is leaked? What if that is used to target you with, say, hateful videos? Or it has happened so many times in our country, where some Facebook post or some Instagram reel or some YouTube video has caused a riot in some part of the country, or has caused a massive outrage on the Twitter communities. This has happened so many times. Reason being, the people who are creating this content are giving willingly the ownership of their data into the hands of these big centralized communities, which are geared towards profit and not geared towards the stakeholders of that particular ecosystem. This is where Web3 comes in. So you see this small Ethereum logo. This is where Web3 comes in. So with Web3, what is its main selling point is decentralization, right? What Web3 is proposing is that we create an internet is, just a second, yes, that is open. It's permissionless, right? It's open for all. Internet censorship, yes, Mr. Cool, very good point. Internet censorship, right? इंटरनेट सेंसरशिप इज बिग बिग प्रॉब्लम. लाइक कंट्रीज लाइक, से फॉर एग्जांपल चाइना में आप गूगल एक्सेस नहीं कर सकते, गूगल या फेसबुक या अमेजोन जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स एक्सेस नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट has a huge amount of censorship going on in their internet. Like they can literally stop people from searching about Tiananmen Square incident that happened in 1985. It was an incident where basically a lot of protesters were, you know, so it's a event that if I talk about on the YouTube live stream, I think this whole YouTube live stream will also be flagged. So I won't go in deep, but I think people know about what happened in China in 1985 in Tiananmen Square. It's a big incident. You can't search about it in China. It's illegal, right? With this, the amount of internet censorship that China has, it's more than the Arab countries altogether, right? So to create an internet that is basically open for all, there is no restriction of entry. It's permissionless because you don't need any government organization, any internet service provider. You don't need permission of that. As long as you have a secure internet connection, you can access the world of Web3, right? Atharva Garze has asked, blockchain also used in Web3? Yes. So essentially, I'm coming to that. This whole Web3 का जो भी हमने अभी बात किया, decentralized होता है, ownership of the data is in the hands of the users. The information is always uninterrupted because in Web3 we use the technology of blockchain. Now blockchain uses something called as distributed computing. So एक होती है centralized computing, जहाँ पे हम सारी जो एक अगर ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो एक centralized server पे हम स्टोर करते हैं. We store it on one computer, one system, one mainframe. Like Amazon has its own mainframe, उनके servers है जहाँ पे वो stored है. In blockchain, what we use is called as peer-to-peer or network computing or distributed computing, where a bunch of computers are interconnected with hardware on a network, right? On connected through the internet, and the data is stored on these devices. Just a second, sorry. Is stored on these devices uh, in a peer-to-peer fashion. That is essentially what the concept of Web3 is. So blockchain is a technology, right? And Web3 is an internet built on top of that technology, right? And there's a very important word at the end of it, that is immutable. So if you know any information that is stored on the blockchain, if some information is mined on the block of a blockchain, it's immutable. Matlab kya hai? Can anybody in the chat please tell me the meaning of immutable? I'll wait for a couple of seconds. Anybody? जल्दी जल्दी. या रिद्धि ने एकदम मतलब गूगल किया व्हाट इज वेब 3 और डेफिनेशन चेक दिया. बट आई आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल.
अनचेंजेबल, कैनॉट बी चेंज्ड. म्यूटेबल माने चेंजेबल, राइट? इम्यूटेबल माने अनचेंजेबल, इट कैनॉट बी इरेज्ड. This has a very, very important use case in the world of finance. I'll tell you how. So, if I want to send money, so for example, Atharva and I, we are friends. I want to send Atharva 1,000 rupees. How do I send it? There are a couple of options, right? एक तो मैं अगर वो मेरे आसपास रहता है तो मैं जाके उसको नोट दे के आ सकता हूँ, भाई ये 500 की दो रख, खुश रहे, राइट? दैट्स वन वे. सेकंड वे एक हो सकता है कि मैं उसको बैंक से ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो बैंक में जाके एक फॉर्म भरूंगा और उसको पैसे दे के आऊंगा. थर्ड वे हो सकता है मैं यूपीआई कर दूं, राइट? आई कैन यूज माई फोन पे, जीपे, वट एवर ऐप आई यूज, कैन सेंड हिम ओवर द मनी ऑन द वॉलेट, राइट? दैट्स द थर्ड वे. नाउ ये सारे तरीकों में जब मैंने अपने बैंक अकाउंट से उसको पैसा दिया या अपने कैश से उसको पैसा दिया, तो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. जब भी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वो जो भी सेंट्रल बैंक होती है, जिस बैंक से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ इंडिया जा रहा है, तो ये दोनों बैंक्स के जो सर्वर्स होते हैं वो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, राइट? वो बोलते हैं कि हाँ, ये अकाउंट से इतना पैसा ये अकाउंट पे गया, इस टाइम पे गया, इस आदमी ने भेजा, इस डिवाइस से भेजा या इस बैंक ब्रांच से भेजा, राइट? सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन. नाउ on Web3, the biggest advantage of immutability या unchangeability is the fact कि अगर एक इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे एक बार चढ़ गई तो उसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, उसको मैनिपुलेट ही नहीं किया जा सकता. सो इसका सबसे बड़ा यूज केस है क्रिप्टो करेंसीज. नाउ क्रिप्टो करेंसीज में हम वैल्यू ट्रांसफर करते हैं. जैसे मैंने अथर्व को 0.01 बिटकॉइन भेजा, राइट? और अथर्व ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है ये ब्लॉकचेन पे एक ब्लॉक में माइन हो जाती है. Now, once the information is mined on a blockchain, क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, मतलब वो हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी. which gives, so हम समझते हैं भैया कि भैया ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन होता कैसे. अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको मैं और डिटेल में समझाता हूं आपको कि एग्जैक्टली होता क्या है. मैजिक नहीं होता है, राइट? जादू होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दैट जादू इज. सी, अब यहाँ पे रॉब और लॉरा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं निखिल और अथर्व. सो निखिल को अथर्व को पैसे भेजने, तो निखिल ने अपना वॉलेट खोला, उसने अथर्व का क्यूआर कोड स्कैन किया, उसने जो भी बिटकॉइन का अमाउंट भेजना था वो अमाउंट उसमें डाला, राइट? और यहाँ से सेंड दबा दिया. अब वो सेंड करने के बाद वॉलेट ने ट्रांजैक्शन को साइन किया यूजिंग प्राइवेट की. तो ये क्या होता है इस पे हम आएंगे, क्या करते हैं वॉलेट में, क्या होता है प्राइवेट की, पब्लिक की, वो सब देखेंगे. फिर ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रोपोगेट होता है पूरे नेटवर्क में. मतलब अगर मैं बिटकॉइन भेज रहा हूँ तो बिटकॉइन नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स पे ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई निखिल ने इतना पैसा अथर को भेजा है, ये सर्कुलेट होती है, सारे कंप्यूटर्स पे चली जाती है, राइट? और फिर इन कंप्यूटर्स में से कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनको माइनर्स बोला जाता है. ये उसी नेटवर्क के कुछ लोग होते हैं जो माइन करते हैं. मतलब क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के को सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कॉम्पिटिशन करते हैं, राइट? वो क्या करते हैं, एक कंप्यूटर एक जनरेटेड उनको एक मैथ्स का प्रॉब्लम देता है. अब वो मैथ्स का प्रॉब्लम हमारे जैसा सिंपल नहीं होता, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. वो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है जो ह्यूमन सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? तो वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कॉम्पिटिशन करते हैं. जो सबसे तेज सॉल्व करता है, जो भी कंप्यूटर, जो भी इंसान उस नेटवर्क का सबसे तेज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस इंसान का जो ब्लॉक है या उस इंसान का जो नोड है, हर कंप्यूटर को एक नेटवर्क में नोड बोलते हैं, तो उस नोड का जो ब्लॉक है उसको यूज किया जाता है ये ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द माइनर हु सॉल्व्स द प्रूफ ऑफ वर्क प्रोपोगेट्स द न्यू ब्लॉक ऑनटू द नेटवर्क. ये सारी भारी भारी टर्म्स है, इसको समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो जिसने मैथ्स का प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व किया उसको मिलेगी टॉफी. बचपन में टीचर नहीं कराती थी हमको कि जो भी मैथ्स का प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगी. और यही तो होता है यहाँ पे भी, जो सबसे पहले वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसका ब्लॉक यूज किया जाता है अगला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए. जैसे ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो सारे बाकी नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और ये ब्लॉक ब्लॉकचेन में अटैच हो जाता है, राइट? और इसके बाद अथर्व को दिखेगा ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन कि भाई ये ट्रांजैक्शन उसके वॉलेट में आ गया, श्योर कर रहा है. Now this information, and that's how essentially you have a transaction from one wallet to other wallet without. अब ये जो सारी प्रोसेस है जहां पे मैंने पैसा भेजा, निखिल ने अथर्व को पैसा भेजा, ये इंफॉर्मेशन विदाउट बैंक या विदाउट इंटरमीडियरी हुई. हाउ कूल इज दैट?
अगर मुझे यूनियन बैंक से बैंक ऑफ इंडिया पैसा भेजना है तो मुझे एक इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है, वो है बैंक। मुझे बैंक के ऊपर बिलीव करना पड़ता है कि बैंक ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगी। जब वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगा, वैलिडेट होगा, तब वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगा। बट यहाँ पे वो काम बैंक का मेरे लिए बैंक ने यहाँ पे नेटवर्क नहीं कर दिया, राइट? सो दिस इज हाउ अ ट्रांजैक्शन हैपेंस ऑन अ क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। तो हम जो भी बात कर रहे हैं अभी वेब3 या उसके बाद ब्लॉकचेन या अभी क्रिप्टो करेंसीज, तो इस तरह से हायरार्की है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड इंटरकनेक्टेड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, राइट? ये टेक्नोलॉजी 1990 से एग्जिस्ट करती है। तो जब से कमर्शियल इंटरनेट अवेलेबल है तब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थियोरेटिकली एग्जिस्ट करती है। 2008 में आता है बिटकॉइन। In 2008 we have the Bitcoin currency which became like the most popular and widely adopted cryptocurrency. तो 2008 में जब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च करती है, जिसका ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल अभी हमने समझा, उसके बाद बिटकॉइन के टॉप पर एक नई डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बनाने का जो सोच है वो उसके बाद आता है। तो अगर हमें हायरार्की समझनी है, पहले आया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी भी बेस्ड है, उसका सबसे कॉमन यूज केस यानी क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी के टॉप पे क्रिप्टो करेंसी को यूज करके, उसकी डिसेंट्रलाइजेशन को यूज करके जो इंटरनेट बना है उसको बोलते हैं हम वेब3। आई बात समझ में? If you guys have understood this, give me a yes in the chat. Give me a yes in the chat if you guys have understood what we have just talked about. I'll wait. Awesome. Awesome. So let's understand now. ये जो ट्रांजैक्शन अभी हमने बात की, इसमें वॉलेट्स की बात हुई कि वॉलेट ए से वॉलेट बी तक ट्रांजैक्शन गया। थैंक यू आशीष, थैंक यू मिस्टर कूल, थैंक यू सिद्धेश, सॉरी, थैंक यू अथर्व। सो हम लोग अब समझते हैं कि वॉलेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर दीज वॉलेट्स? अभी हमने देखा कि निखिल के वॉलेट से अथर्व के वॉलेट में पैसा गया, राइट? ये होता क्या है वॉलेट? वेल, वॉलेट का सिंपली मीनिंग क्या है? बटुआ, राइट? बटुआ क्या होता है? बटुए में हम लोग पैसे स्टोर करते हैं। वेल, ये वॉलेट भी कोई डिफरेंट वॉलेट नहीं है। इस वॉलेट का सिंपल ये मतलब होता है, जैसे अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना है, अभी अब आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो आपको यूट्यूब वीडियो देखने के लिए यूट्यूब का ऐप लगाना पड़ता है या अपने ब्राउजर पे जाके youtube.com लगाना पड़ता है, राइट? तो जिस तरह ब्राउजर आपका एक्सेस विंडो है आपके वेब 2 इंटरनेट के लिए, आपके वेब पेज को देखने के लिए, वॉलेट्स आपका क्लाइंट विंडो है वेब 3 इंटरनेट को देखने के लिए, राइट? या वेब 3 की किसी भी इकोसिस्टम को एक्सेस करने के लिए आप वॉलेट का इस्तेमाल करते हो। ये वॉलेट आपके ब्लॉकचेन में, आपके वेब 3 में आपकी आइडेंटिटी भी है, पहचान भी है, राइट? और आपकी ट्रांजैक्शन करने की टूल भी है। अब देखो, वेब 3 में भी अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, प्रिवेसी की बात करते हैं, यहाँ पे भी अगर मुझे ईमेल और नाम से साइन करना पड़े, राइट? इफ आई साइन विथ माय नेम एंड ईमेल, तो प्राइवेसी गॉन, राइट? देयर इज नो प्राइवेसी। सो हाउ डू आई गेट प्राइवेसी? वेल, यूजिंग अ वॉलेट आई गेट अ पब्लिक की, राइट? पब्लिक की होता है मेरा एड्रेस, मेरा वॉलेट एड्रेस। ये वॉलेट एड्रेस पब्लिकली आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। इस पब्लिक एड्रेस की मदद से लोग आपको पैसे सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज अ पब्लिक की। नाउ व्हाट इज अ प्राइवेट की? प्राइवेट की आपका कोई भी ट्रांजैक्शन साइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप जब भी एक ट्रांजैक्शन साइन करते हो, आपको आपका प्राइवेट की से उस ट्रांजैक्शन को साइन करना पड़ता है। मतलब जब जब आप चेक जमा करने जाते हो बैंक में, तो आप चेक पे साइन करते हो ना, बस उसी तरीके से। लेकिन आपकी प्राइवेट की आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है। ऑब्वियसली आप अपना फेसबुक का पासवर्ड किसी के साथ शेयर करोगे नहीं, राइट? सो आप अपनी प्राइवेट की भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। वॉलेट्स जो होते हैं वो इन्हीं पब्लिक की और प्राइवेट की के कंसेप्ट पे बने होते हैं। अब दो टाइप के वॉलेट्स होते हैं, एक होता है कस्टोडियल वॉलेट और एक होता है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। तो पहले कस्टोडियल वॉलेट समझते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन वॉलेट टाइप दैट यू विल कम अक्रॉस। ना, कस्टोडियल वॉलेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर वॉलेट और एक होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट या एक्सटेंशन वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट पेन ड्राइव की तरह दिखने वाले होते हैं। सो यू हैव अ पेन ड्राइव which has a biometric authentication, so it has a fingerprint, and you can attach it to your computer system. You can download all of your cryptocurrency onto that pen drive, and you can secure it with the biometric authentication and a two-factor authentication, and all of your money, all of your crypto asset is stored in that hardware extension. Now, what is an extension wallet? What is a software wallet? Well, software wallets are essentially these browser extensions like Google Chrome पे सबसे पॉपुलर वॉलेट जो क्रिप्टो वॉलेट है वो है मेटामास्क। तो मेटामास्क जो है ये सबसे कॉमन क्रिप्टो वॉलेट है जो यूज होता है सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस यूज करने के लिए। आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू। नो, आई थिंक मेरा टैब मुझे पूरा ही प्रेजेंट करना पड़ेगा उसके लिए। सो
essentially what metamask is a software extension. आपको सिर्फ एक extension install करना है, आपका public and private की generate होगा और आप उस wallet से वो सारा cryptographic transaction कर सकते हो. Now इसका फायदा ये है, ये जो custodial wallet है, मतलब क्या, वो जो क्रिप्टो है, आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी है, उस सारा जो क्रिप्टो करेंसी का कस्टडी है वो आपके पास होता है. यू हैव द एक्सेस टू ऑल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी दैट यू ओन. So it's stored in on your local storage, on your peer, on your network, on your node. What are non-custodial wallets? Well, आपने इनका नाम बड़ा सुना होगा न्यूज में, WazirX, CoinDCX, Binance, Coinbase, etc., etc. All of these companies are examples of non-custodial wallets. These also have a name called as crypto exchanges. So essentially ये लोग क्या करते हैं, आप जो भी क्रिप्टो खरीदते हैं, सपोज मैंने एक बिटकॉइन खरीदा, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट ऑन माय हार्डवेयर, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन माय लोकल स्टोरेज, दे स्टोर इट फॉर मी, मेरे नाम पे, और मुझे उस स्टोरेज का एक रिसीट मिलता है. राइट? अगर आपने वो स्कैम 1992 वाली सीरीज देखी है, तो वो जब बैंक को, दूसरे बैंक को पैसा देना होता है, तो वो बीआर देते हैं, बैंक रिकॉर्ड. तो वो बीआर में बेसिकली होता है कि भैया हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, फिजिकली कैश मूव करने से बेहतर है हम आपको बीआर दे रहे हैं, आप बीआर जाके डिपॉजिट करके आ जाओ. राइट? वो बीआर, और वो जो बीआर है वो एक बैंक से दूसरी बार बैंक में लेके जाता है हर्षद मेहता. तो एक क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपके हर्षद मेहता है, उतने ही डूबियस है. Just kidding. But essentially what these guys are doing is storing your crypto for you. So instead of you having the custody to your crypto, they are having your custody of your crypto. Right? So these are the two types of wallets. Now these wallets can be used to basically access the Web3 internet. Now what is the Web3 internet? Well, let's understand one of the first use cases, one of the most popular use cases, that is NFTs. आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने NFTs के बारे में बिल्कुल सुना है. What are NFTs? बहुत आपने सुना होगा, कोई 6 मिलियन में सेल हो रहा है, कोई कलेक्शन $60 मिलियन में सेल हो रहा है. Well, what are these NFTs? एक बार समझते हैं carefully. Well, NFTs are definitely not nice fat tummies. NFTs stand for non-fungible token. I think वो subtext वहाँ पे black थोड़ा सा हो गया. But so NFT का full form होता है non-fungible token. Now what are tokens? पहले उसके लिए समझ लेते हैं. बट सो फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन में मैं डिफरेंस समझा देता हूँ. सो एग्जांपल लेते हैं 100 रुपए की नोट का. राइट? सो 100 रुपए की नोट है, अगर मेरे पास एक 100 रुपए की नोट है, और अथर्व के पास 100 रुपए की नोट है, और तेजश्री के पास एक 100 रुपए की नोट है. नाउ ऑल ऑफ दीज 3 नोट्स आर इक्वल इन वैल्यू. सारी 100 रुपए की नोट, भले ही वो एकदम लेटेस्ट वाली जो पर्पल कलर की 100 रुपए की नोट आती है, या 5 साल पुरानी वो जो ग्रीन कलर की बड़ी 100 रुपए की नोट आती थी, वो 100 रुपए की नोट हो, तीनों की वैल्यू एक ही है, 100 रुपए. राइट? फंजिबल है. मतलब क्या है, अगर मैं तेजश्री के 100 रुपए लेता हूं और अपनी नोट उसको देता हूं, तो दोनों के पास 100 ही रुपए रहेंगे. वो 100 रुपए की नोट इंटरचेंजेबल है. फंजिबल है मतलब एक्सचेंजेबल है. उसको आप चेंज कर सकते हो, फिर भी उसकी वैल्यू सेम रहती है. उसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. दीज आर फंजिबल. बट अभी इमेजिन करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम लोग गोल्ड की 100 रुपए की नोट बनाएंगे. ठीक है? गोल्डन 100 रुपए की नोट बनाएंगे, सोने से बनी होगी, और ये 100 रुपए की सिर्फ 100 ही नोट बनाएंगे. राइट? अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने पहली बात तो गोल्ड की नोट बना दी, रेयर. अब उसमें से भी सिर्फ 100 ही नोट बनाई, इवन रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गई. राइट? अब ये सिर्फ 100 रुपए की नोट है, लेकिन क्योंकि गोल्ड से बनी है, एक्चुअल फिजिकल गोल्ड से बनी है, और लिमिटेड इन सप्लाई है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई. राइट? अब लोग 100 रुपए से कई गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे उस 100 रुपए की नोट के लिए. व्हाई? बिकॉज इट इज यूनिक, बिकॉज इट इज लिमिटेड इन सप्लाई. Well, NFTs are here to solve that exact problem. NFTs are here to create digital uniqueness. देखो, जब मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, एक पेंटिंग बनाता हूँ, जैसे ये मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई है, राइट? तो जब मैं ऐसी पेंटिंग बनाता हूँ, तो उसका यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या है, वो जो कैनवस होगा उस पर मैं अपनी साइन करूंगा. राइट? वो कैनवस के पीछे मैं एक ऑथेंटिकेशन मार्क डालूंगा, एक सर्टिफिकेट दूंगा उसको कि भाई ये पेंटिंग मैंने बनाई है. लेकिन जब मैं ग्राफिक डिजाइन बनाता हूँ, एक पिक्चर बनाता हूँ, या एक वीडियो बनाता हूँ, एक ऑडियो पॉडकास्ट बनाता हूँ, गाना गाता हूँ और एक गाने का वीडियो बनाता हूँ, हाउ डू आई प्रूव दैट इट्स डिजिटली यूनिक? Well, using NFTs, I can make an NFT, a non-fungible token of a video, an image, a GIF, a song, a movie, an audio file like a podcast or an interview or a radio show, etc. And I can make an NFT. I can mint an NFT on a blockchain. Means I can mint tokens for that particular content on the blockchain,
and I can prove that these are digitally unique items. Why? Because these NFTs create that digital uniqueness, right? Every NFT has an owner, right? So every NFT is owned by some wallet, जो हमने अभी पढ़ा, right? These are compatible with network dApps, so and these are valuable digital assets. दे कैन बी शेयर्ड अमंगस्ट यूजर्स. तो जब भी मैं एक NFT अगर मैंने बनाया अपने गाने का, और मैंने अपना एक खूबसूरत सा गाना एकदम अरिजीत सिंह का कवर बनाया और मैंने अथर्व को भेज दिया, तो अब अथर्व उस NFT का ओनर हो गया. तो अगर उसको प्रूफ करना है कि ये जो कंटेंट है ये मैंने बनाया, तो कैसे प्रूफ करेगा? यूजिंग NFT. सो NFT इज अ वे टू प्रूव डिजिटल ओनरशिप, राइट? NFTs के और बहुत सारे यूज केस है. वन ऑफ द प्राइम यूज केसेस इज अभी गोवा में Web3 कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बहुत बड़ा, लाइक पूरी दुनिया भर से Web3 की बहुत सारी कंपनीज वहां आ रही है. तो उन्होंने क्या किया? टिकट्स की जगह पे NFTs बांटना शुरू कर दिया. सो आपने टिकट स्कैल्पिंग का सुना होगा. जब भी इंडिया का क्रिकेट मैच होता है इंडिया में, जिस भी शहर में हो रहा होगा, उस शहर में अगर आप टिकट बुक करने जाओ, जिस दिन टिकट लॉन्च होती है उसके आधे घंटे में सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है, और फिर वही टिकट्स कुछ दिनों बाद ब्लैक में सेल होना शुरू हो जाती है. तो 1000 की टिकट 10,000 में, 5,000 की टिकट 50,000 में, ये सारी टिकट्स बिकना शुरू हो जाता है, राइट? सो दिस हैपेंस विद टिकट्स. तो उन्होंने क्या किया? टिकट्स की NFTs बना दी, राइट? और NFTs सेल करना शुरू कर दिया और नॉन ट्रांसफरेबल NFTs बनाई. मतलब जिस वॉलेट से उसको खरीदा गया है वही वॉलेट दिखा के अंदर आप आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते, राइट? जिस नाम से वो NFT मिंट हुई है उसी नाम की एंट्री अंदर जाएगी, उसके अलावा उस टिकट पे कोई नहीं जा सकता. बिकॉज ऑफ विच NFT स्कैल्पिंग या टिकट स्कैल्पिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, right? And there's also a price cap and total cap on how many people can buy a ticket at a particular given instance. So this is just one of the use cases of NFT uh, that can be used to solve some of real world problems using the technology underlying, that is crypto and blockchain. I hope you understand what are NFTs. Now let's go to the next topic. What are dApps? So आप लोग अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर आपको समझ में आता है कि हर किसी भी ऐप का या किसी भी वेबसाइट का तीन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, 3 या 4 इसेंशियल पार्ट होते हैं. एक होता है UI UX या डिजाइन, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, राइट? तो UI UX एंड फ्रंट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, आयुष का क्वेश्चन आ रहा है NFTs पे. ओके, I'll take a few questions. But many times I saw NFTs which are sold in huge amounts, but they are resold at $1, $2. See, so Ayush, this is a good question actually. You've seen these people selling out NFTs like on crazy amounts and then like reselling them for very cheap. Well, the thing is, the current NFT scenario that you see right now is built on hype, right? So a lot of these NFT projects are just for bragging rights. मेरे पास NFT है. जैसे बचपन में हमारे पास वो पोकेमॉन कार्ड्स होते थे. if you played those cards, like वो कार्ड गेम होता था जिसमें you would had those individual like पोकेमॉन like Charizard, Blastoise, Venusaur, etc. and those cards used to come in like 50 rupees का पैक, और हर पैक में चांस होता था कि एक रेयर कार्ड मिलेगा, राइट? अब हमको वो कार्ड की बहुत इनहेरेंट वैल्यू लगती थी क्योंकि ब्रैगिंग राइट, ब्रो मेरे पास Charizard का गोल्ड कार्ड है. वी यूज्ड टू लव दोस थिंग्स, राइट? हमारे दोस्तों में चौड़ बढ़ जाती थी अगर मेरे पास वो कार्ड होता था तो. बट मेरे बाप को कौन समझाएगा ये बात? लाइक माय फादर वुड बी लाइक क्या ये क्या पागलबंदी कर रहा है, ये क्या है, राइट? ही वुडंट केयर अबाउट ये क्या बात कर रहा है, ये कार्ड वार्ड वो फाड़ के फेंक देते थे मेरे कार्ड्स. एंड आई यूज्ड टू क्राई लाइक अ बेबी ऑल नाइट कि ये कैसे हो गया, राइट? बिकॉज इन माय हेड आई हैव वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कार्ड क्योंकि वो गोल्डन कार्ड है, इट हैज रेयर चार्जर. मेरे को वो सब समझ में आता है. एक बाहर से देखने वाले को क्या समझ में आएगा ये क्या इंपॉर्टेंस का है? So NFTs are currently in that exact same scenario, right? तो मतलब कार्ड है, उसका इनहेरेंट वैल्यू मेरे को लगता है कि है, जिसने मेरे को बेचा है उसको लगता है कि है, लेकिन और किसी को उसका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज इट डज नॉट हैव एन इनहेरेंट यूटिलिटी. तो जो अभी ये लोग Web3 कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, उन लोगों ने उस कार्ड की वैल्यू बढ़ा दी. अब अगर तुम्हारे पास वो कार्ड है तो तुम एक बहुत हाई टिकट इवेंट में एंट्री पा सकते हो, राइट? या अगर मेरे पास वो कार्ड है तो मेरे को मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ वो कार्ड अनलॉक होने के बाद ही मिल सकता है, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड OTT पे मैंने उसको होस्ट कर दिया उस वीडियो को, और मैंने बोला कि अगर मेरे पास ये NFT है, अगर मैं उस NFT को होल्ड करता हूँ तो ही मैं उस वीडियो को देख सकता हूँ. सो इमेजिन करो पायरेसी को हम कितनी एंड तक खत्म कर सकते हैं अगर NFTs को इस तरीके से लाइक अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें. नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया ऑफ how dApps and how NFTs can be used. These are not the exact use cases, and I don't think that all of these technologies that we are seeing right now are in any shape or form perfect, right? There is a lot of flaws in all of this.
but I'm just trying to tell you how these can be used to solve a lot of problems, right? तो हम जब dApps की बात करते हैं तो there is a front end, there is a back end of every app, right? हर ऐप का एक डेटाबेस भी होता है. नाउ उस डेटाबेस को हम अलग अलग डेटाबेस पैटर्न से चलाते हैं. तो हम अगर स्ट्रक्चर डेटाबेस है, एसक्यूएल यूज करते हैं, मोंगोडीबी यूज करते हैं, नो एसक्यूएल यूज करते हैं, माई एसक्यूएल यूज करते हैं. अलग अलग वेज है डेटाबेसेस को हैंडल करने की. अब अगर मैं उस डेटाबेस पार्ट को हटा दूं और उसकी जगह पर एक ब्लॉकचेन को लगा दूं, so instead of storing the data in a centralized server based fashion, I store the data in the form of peer to peer nodes, like मैं एक network of computers पे उस data को store करूं instead of storing it in one singular location. There you have a decentralized application or a DApp, right? इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहली बात तो प्राइवेसी मिलती है, right? Because your data is not stored in one centralized server owned by one big company. Instead, it's stored on a network of computers, right? But ये जो डेटा स्टोर होता है वो एग्जैक्टली डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, वो मेटा डेटा स्टोर हो रहा है, राइट? सो द इंफॉर्मेशन इज फ्रैगमेंटेड, सो नोबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सीइंग ऑन देयर नोड्स, right? So that is what is giving you privacy. Then there is censorship resistance, because now this data is not, अगर मैं कल Amazon, अगर आपने ये बहुत बार देखा होगा, किसी एक कंपनी का सर्वर हैक हो जाता है या डाउन हो जाता है तो आपका सारा काम फंस जाएगा, राइट? तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर इस डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की मदद से स्टोर करें, तो अगर 4 कंप्यूटर, सो किसी भी नेटवर्क को हैक करने के लिए देयर इज अ टर्म इन साइबर सिक्योरिटी कॉल्ड एज 51% अटैक. तो मतलब किसी नेटवर्क की अगर 51% कंप्यूटर्स या नोड्स पे अगर कब्जा हो जाए, राइट, तो हम उसको मतलब ये कर सकते हैं, हम उसको हैक कर सकते हैं. बट ब्लॉकचेन में बिकॉज ऑफ द अदर स्टफ लाइक क्रिप्टोग्राफी जिसको बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी इज कॉल्ड फॉर रीजन, राइट? क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें. सो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स की मदद से सारे ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली मेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी हैक्ड इजीली. देयर इज पॉसिबिलिटी, बट उतना कंप्यूटेशनल पावर ही नहीं है हमारे पास कि उस टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सके. So this provides censorship resistance, privacy, and flexibility of development, because you can develop with a lot more freedom when it comes to distributed computing. I had a doubt if blockchain. Okay, Ayush has a question. If blockchain stores data in the network of computer, can't someone hack the private key somehow and hack the data? Yeah, absolutely, it is possible. But so the thing is, even if I say have access to one node, I will have to get access to 51% of all the nodes. So for example, अगर मेरे पास 100 कंप्यूटर्स है, 100 कंप्यूटर्स है एक नोड पे, तो 51 नोड्स का मेरे को एक्सेस लगेगा. उसके बाद हैवी कंप्यूटेशनल पावर, मतलब ऑलमोस्ट अप टू क्वांटम कंप्यूटिंग लेवल की टेक्नोलॉजी लगेगी उस डेटा को डिसाइफर करने के लिए. गेटिंग माय पॉइंट? तो इवन इफ द हैक इज समहाउ सक्सेसफुल, it will still have like the hacker will still have difficulties to hack information on a blockchain, right? Although see, अभी अगर आपने recent news पढ़ा होगा तो there have been instances जहाँ पे data hack हुआ है, but that has happened on individual user level basis, जहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि instead of hacking the blockchain, उन्होंने एक यूजर को हैक करके उसका पैसा गायब कर दिया, राइट? या अगर कोई ब्रिज है, ब्रिज अगर इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक टू कवर इन दिस सेशन, बट अगर एक सेंट्रलाइज्ड हब है, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर हम उसको हैक कर लेते हैं, उनका डेटाबेस हैक कर लेते हैं, तो सारा क्रिप्टो अपने पास आ जाएगा, राइट? Mr. Cool has a question: can government access NFTs? No, actually. So none of this is accessible to the government if you don't share your private information. Simple. Again, ये तो वैसे हो गया ना कि मतलब गवर्नमेंट आपका एनएफटी नहीं देख सकता, क्योंकि आपका वॉलेट का जो पब्लिक की और प्राइवेट की है वो प्राइवेट है. अगर आप देते हैं सामने से खुद से, वो अपने एंड से हैक नहीं कर सकते. सी, अगर कल आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को मैसेज भेजते हो और गवर्नमेंट को आप पे शक हुआ, तो वो व्हाट्सएप को धमकी दे सकते हैं कि भाई इसका चैट खोल के दे, एंड व्हाट्सएप बाय लॉ हैज टू गिव देम ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दैट्स हाउ द रेगुलेशन इन दिस कंट्री वर्क्स. क्रिप्टो में ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो नेटवर्क पे जो डेटा जा रहा है वो उस नेटवर्क को भी नहीं मालूम किसका है. Get my point? Now, we've understood Dapps, we've understood decentralized applications and how all of this works. Now, let's understand a DAO. ये भी काफी पॉपुलर टर्म है Web3 में, जो इधर उधर काफी सुनाई जाती है. So, what is a DAO? Well, imagine DAO as like an internet community with a bank account. Now, what do I mean by that? So, essentially, DAO का full form है Decentralized Autonomous Organization, right? So, it's like a community-led entity with no centralized authority. तो इसका एक एग्जांपल देने के लिए मैं समझूंगा कि देखो,
गूगल जो है या कोई भी एक स्टार्टअप पकड़ लो, जोमेटो, राइट? अब जोमेटो को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स है और एक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स है। तो जैसे अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं सारे वो लोग जिन्होंने कंपनी को चाहा है, तो वो लोग सारी चीजें। Web3 is interconnected, then it is easy for hacker to access private and public data of targeted users, and we can't find who hacked the hack cause of blockchain tech. So the thing is, it's not very easy to hack public and private information. Okay, although it's interconnected, although we know that nodes are interconnected, it's not really a piece of cake to hack. So जैसे अगर मैं अनसिक्योर्ड ब्लॉकचेन की बात करूं, अब इसमें फिर से ब्लॉकचेन ट्राइलेमा की बात करनी पड़ेगी, बट इफ आई टॉक अबाउट एन अनसिक्योर्ड ब्लॉकचेन जिसके सिक्योरिटी एल्गोरिथम सही नहीं है, जैसे जो पुराने SHA-256 काइंड ऑफ एन्क्रिप्शन है, जो क्रिप्टोग्राफी है, उसमें शायद ये वल्नरेबिलिटीज होंगी, but the more we move towards technologies that have robust cryptography in it, it's not very easy to actually decipher. So अब ये ना थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए, बट अगर आपको एंट्रोपी मालूम होगी, कंप्यूटर में एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस। सो जब मुझे एक पब्लिक की एक स्ट्रिंग जनरेट करनी होती है, एक 64 बिट का स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ता है। Now when I have to generate that 64 bit का string, we have to make sure that that string is completely random. Now to achieve complete randomness on a computer is actually a very hard thing on in computing in general. मतलब quantum computing लगती है exact random numbers generate करने के लिए। हमको लगता है कि हाँ कोई भी एक string generate कर दो तो वो random होता होगा, नहीं। Actually computers are way smarter in terms of calculating randomness, राइट? वो किसी भी नंबर को अगर आप उनके सामने रख देते हैं तो वो उसका रैंडमनेस जज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर computers are that powerful, CPUs are that powerful, they have ALUs that can solve the randomness and can understand the pattern. So making true random strings on for blockchain is a very very difficult problem that a lot of blockchain companies are trying to solve, achieving true entropy basically। जब अगर हम एंट्रोपी अचीव कर लेते हैं तो हम ऐसी पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज जनरेट कर पाते हैं जो हैक करना इजी नहीं है। वो इतना मुश्किल है कि एक प्राइवेट की हैक करने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और अगर मुझे एक प्राइवेट की हैक करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है, और अगर मेरे पास क्वांटम कंप्यूटर है, तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी नेटवर्क को हैक करने की जरूरत है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट चीप, नॉट टुडे, नॉट एवर दे हैव बीन। So even though these networks are interconnected with each other, it's not very easy to hack public and private key. See, अगर मैं willingly तुमको अपनी private key दे दूं ना, तब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा हो गया कि मैंने willingly तुमको मेरा Gmail का पासवर्ड बता दिया, तो अब मेरे को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? ये सिंपल सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो ये जो जितने भी हैक्स हो रहे हैं ना, यहाँ पे ये लोग किसी भी तरीके से एक्चुअली नेटवर्क को हैक नहीं कर रहे हैं, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं। PHISHING वाली फिशिंग, फिशिंग वाली फिशिंग नहीं। फिशिंग मतलब क्या? ये लोग यूजर्स को मैनिपुलेट करके उनके हाथों से, उनके विलिंगनेस से उनकी प्राइवेट की ले रहे हैं, और तब जाके नेटवर्क हैक हो रहा है। So it's not about the technology, but it's about the naivety of the users. It's because there's a lack of awareness as to how these technologies run. People are willingly giving their private keys because they are being fished using phishing attacks, right? So that's the underlying problem here. All of these hacks that you see, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में सोलाना का बहुत बड़ा हैक हुआ था, राइट? सो जो साइबर फिशिंग जिसको बोलते हैं, या पीयूष जानी हैज डन, जो नाम है वो सही से डाला है उन्होंने। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली वॉलेट्स को हैक नहीं कर सकते, उनको भी मालूम है वो नहीं कर सकते। देयर आर एक्चुअली वल्नरेबिलिटीज इन द एक्सटेंशन इटसेल्फ, जहां पे वो क्या हो रहा है कि अब ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर ओके विद इट, बट सो जब हम एक्सटेंशन पे डेटा स्टोर करते हैं तो उस वॉलेट में एक वल्नरेबिलिटी था कि वो एक्सटेंशन ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में उसका जो की है उसको सेव कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वॉलेट को हैक नहीं कर पाए, उन्होंने उस ब्राउजर को हैक कर लिया, गूगल क्रोम को या माइक्रोसॉफ्ट एज को, उनको हैक कर दिया। अब उनको हैक करने की वजह से वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई। So yes, exactly what Aishwarya is saying here is basically we are in the control, right? If we can be aware, जैसे ये देखो, ये उसी तरीके से जब इंटरनेट पहली पहली बार आया था ना, जब यूजर नेम पासवर्ड का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में नहीं था, तो फिशिंग अटैक्स वर वेरी वेरी कॉमन। लाइक इन, जब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, नया नया फेसबुक आया था तब, लाइक हम लोग ना स्कूल से इंटरनेट कैफे में जाते थे, और लाइक 20 रुपए देके 10 रुपए देके दे विल बेसिकली हम लोग इंटरनेट जाते थे और वो फेसबुक अकाउंट बनाते थे और लाइक अपने दोस्तों को वहाँ पे ये भेजते थे। इट वाज अ क्रेज बैक देन, वेरी फन। तो जब हम लोग वो करते थे, तब दोज इंटरनेट कैफे ओनर्स यूज्ड टू हैव दोज सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स।
तो एक्चुअली हम जो भी कर रहे हैं उसका की लॉगिंग से लेके सारी चीजें एक्चुअली वो पीसीज में हैक हो रही थी, बिकॉज वी डिडंट नो इट बैक देन। हमारे फेसबुक अकाउंट्स हैक, जो लोगों के फेसबुक अकाउंट्स फ्रीक्वेंटली हैक होते थे, क्योंकि वहां पे वो जो सर्वर वाले जो पीसीज लगे होते हैं इंटरनेट कैफेज में, वो लिटरली टाइप, मतलब आप जो टाइप कर रहे हैं वो लॉक कर सकता है। तो उसको सब मालूम है आप कौन सा पासवर्ड डाल रहे हो, क्या टाइपिंग कर रहे हो, किसको मैसेज भेज रहे हो, सब मालूम है। सब नहीं करते थे बट कुछ लोग करते थे, एंड दैट्स हाउ अकाउंट्स यूज्ड टू गेट हैक्ड इन दोस डेज, राइट? तो ये क्यों हो रहा था? बिकॉज द टेक्नोलॉजी वाज नॉट रेडी? नो, बिकॉज द पीपल वर नॉट रेडी फॉर दैट टेक्नोलॉजी. So all of these hacks that we are seeing, these are not because the technology is not robust. It's because the people are not ready with the intricacies of security. राइट? यहाँ पे एक और चीज होती है, अगर आप अपना प्राइवेट की भूल गए, अपना पब्लिक की भूल गए, अपना रिकवरी फेज भूल गए, तो आपका पैसा कोई रीसेट नहीं कर सकता, वो गया. दैट इज अ बर्न्ट वॉलेट, right? Can we recover NFT after hack? Depends on what kind of hack it is, Mr. Pool. So if it's a wallet hack जहाँ से आपके wallet से उसने किसी को like वो NFT ट्रांसफर कर दिया wallet से, very hard. अगर वो पासवर्ड हैक हो गया है तो शायद एक चांस है, बट you have to talk to a cyber security expert to really answer this question. But so yeah, it's very difficult when you think about it. So yeah, it's about making awareness for people so that they make intelligent decisions, right? So that is the challenge right now. So हम लोग DAOs पे थे, इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग we'll have some time for questions as well. But I hope you guys got the answers that you were looking for. But Ayush has so Ayush, I'll take this in the end if that's okay. uh, has like asked a very relevant question, so I'll take it in the end. Okay, so DAOs are decentralized autonomous organization. This is a way to run a company. So for example, अभी हम लोग कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं हमारे स्ट्रीम पे, बट अगर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी एक कंपनी है, राइट? तो हम लोग एक कंपनी बनाते हैं, एक डाओ बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक कम्युनिटी की एक कंपनी बनाते हैं, राइट? और हम लोग इस कंपनी को चलाने के लिए कैसे चलाएंगे? अगर डिसीजन लेने, अगर हम बोले कि सब लोग ही अपने अपने डिसीजन से चलाएंगे, तो भाजी मंडी बन जाएगी, कोई डिसीजन कभी काम ही नहीं करेगा. बट हाउ डू आई मेक श्योर कि ये जो कंपनी है स्मूथली चले? तो हम डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बेसिकली हम डाओ में टोकन्स बनाते हैं, एक डाओ के टोकन्स रिलीज किए जाते हैं, और लोग उस टोकन्स को खरीद सकते हैं, या उस डाओ के स्पेसिफिक रूल्स की, भाई अगर आप ये काम करते हो तो आपको इस डाओ के टोकन मिलेंगे, या अगर आप ये कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको इस डाओ के टोकन मिलेंगे. Now using these tokens are not like your NFTs or your currency tokens. These tokens are called as governance tokens. इन गवर्नेंस टोकन्स की मदद से आप इस डाओ को चला सकते हैं. मतलब अगर इस डाओ का रूल है कि इस डाओ के अगर 10 टोकन में होल्ड करता हूं, तो आई कैन बी अ गवर्नर और अ वोटर ऑन दिस डाओ. तो ये वोटर्स क्या करते हैं? बेसिकली कोई भी एक डिसीजन अगर लेना होता है, तो वो लोग एक प्रपोजल डालते हैं डाओ में. जैसे अगर मुझे एक डिसीजन लेना है कि इनटू द वेब3 मेटावर्स फिजिकल किया जाए नासिक में, जस्ट अ प्रपोजल, तो मैं अपने डाओ में ये प्रपोजल डालूंगा और सारे मेंबर्स को बोलूंगा कि वोट करो. वोट की एक टाइमिंग सेट करूंगा, वोट की एक फीस सेट करूंगा, और लोग अपना वोट करना शुरू करेंगे. जिन जिन के पास 10 से ज्यादा टोकन्स है, वो लोग इसमें वोट कर सकते हैं. सो अगर 50% से ज्यादा लोग, मतलब 51% से ज्यादा लोग बोलते हैं कि हाँ, दिस प्रपोजल इज पास्ड, हाँ करना चाहिए, तो देन द रेजोल्यूशन इज पास्ड, और अब इस डाव को ये डिसीजन एनफोर्स करना है, राइट? जैसे हमारी सरकार चलती है, जब हमारी पार्लियामेंट में हमारे एमएलएज एमपीज वोट करते हैं, पार्लियामेंट में एमपीज वोट करते हैं, तो वोट करने के बाद बेसिकली आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ डालते हैं, सॉरी एक बिल प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में, लोग उस पर डिबेट करते हैं कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर वोट होता है, वोट में अगर वो पास हुआ तो बिल पास हो जाता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है, फिर से बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है. Essentially it's a form of governance on blockchain, right? So using token economics, it's a fun way to run. Now इसके applications देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे. तो देखो ये डाओ का लैंडस्केप है, अलग अलग टाइप के डाओस जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. सो टॉप लेफ्ट पे आप देखेंगे डाओ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब अगर डाओ बनाने के दो तरीके हैं, एक तो मैं सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के डाओ बना सकता हूँ, विच इज अ बॉल गेम टुगेदर. मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, बट मुझे कोडिंग नहीं आती, तो क्या करूंगा? आई कैन यूज दिस डाओ ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच आर लाइक प्लग एंड प्ले टूल्स टू बिल्ड a company, right? Then there are various kinds of DAO, जैसे social DAOs है. So there is an FWB or Friends with Benefits DAO, जो essentially एक सोशल नेटवर्किंग DAO है, जहाँ पे आप दोस्त बना सकते हैं, दोस्तों के साथ में आप म्यूजिक बना सकते हैं, आप उनके साथ चिल कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़, राइट? देयर आर गेमिंग DAOs, जहाँ पे आप गेम खेल सकते हो, तो जाके आप लोगों के साथ दोस्ती बना के आप वहाँ पे गेम खेल सकते हो, आप गेम बना सकते हो, राइट? देयर आर प्रोटोकॉल DAOs, जहाँ पे अलग अलग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के खुद के DAOs है. तो अगर जैसे
कोई कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन कंपनी यूनिस्वैप. सो इट्स यूनिस्वैप इज लाइक अ टोकन स्वैपिंग लाइक अ प्रोटोकॉल. तो उस प्रोटोकॉल को चलाने के लिए एक फॉर्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, एक डाओ है. तो उस कंपनी को उनकी कम्युनिटी चलाती है. तो कंपनी में अगर नए डेवलपर्स को हायर करना है तो वो कम्युनिटी डिसाइड करेगी कितने लोगों को हायर करना है. प्रपोजल सपोर्ट किए जाते हैं. अगर कंपनी के कोड में कुछ चेंज करना है तो प्रपोजल सबमिट किए जाते हैं. ये सारी चीजें डाओ से होती है. राइट. मीडिया, अब कितना हम लोग देखते हैं कि मीडिया बायस है, बिका हुआ मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाट इफ वी कुड हैव अ मीडिया दैट इज फंडेड बाय अ कम्युनिटी. तो अब जब कम्युनिटी जो चाहेगी वही वो न्यूज़ कवर करेंगे. सो फॉर दैट देयर आर मीडिया डाउस, राइट. देयर आर इन्वेस्टमेंट डाउस वेयर यू कैन become a part of those DAOs and you can invest in startups using those DAOs. तो आप वोट कर सकते हैं कि कौन से स्टार्टअप को पैसा जाएगा, कौन से स्टार्टअप को नहीं जाएगा. तो ये होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ DAO. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन. व्हाट इज मेटावर्स. सो अब तक आपने सुना होगा इनटू द वेब3 मेटावर्स. ये टी शर्ट भी मैं पहना है, ये वही है, इनटू द मेटावर्स. व्हाट एग्जैक्टली इज द मेटावर्स. बहुत सुना है इसके बारे में हाइप. सब समझते हैं मेटावर्स होता क्या है, राइट. तो मेटावर्स essentially is supposed to be the next version of social internet that is geared around or based around immersive activities. तो जिस तरह से हमारा करंट सोशल मीडिया इज बेस्ड अराउंड लाइक हमारा करंट सोशल मीडिया रील्स के अराउंड बेस्ड है, राइट. जब हम लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं हम रील्स पोस्ट करते हैं, हम पिक्चर्स इमेजेस वीडियोस डालते हैं, लोग उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं. ट्विटर जो है वहाँ पे हम ट्वीट करते हैं, तो हमारा सोशल एक्सपीरियंस उस तरीके से बना हुआ है. तो अब जो ये नया सोशल मीडिया है, जब हमारी 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन 80% से भी ज्यादा टाइम इंटरनेट पे बिताती है, तो व्हाट इफ वी कुड बिल्ड अ मोर इमर्सिव इंटरनेट that is built around experiences. So जहाँ पे instead of me sharing a reel, I could actually be a part of a scenario inside that reel, right. I could connect through my computer, play it like a game, or connect through my VR headset, or connect through an AR enabled camera. जो भी हो मैं उस इसका यूज कर सकता हूँ. The things that we can't get attached in real life, metaverse is used. Yes, so metaverse के बहुत सारे applications है. वो हमें समझने होंगे. उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो मेटावर्स है उन किन लेयर्स से बना हुआ है. तो ये मेटावर्स जो है, हमारा मेटावर्सल एक्सपीरियंस जो है, वो 7 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 7 लेयर्स. तो सबसे पहला लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है एक्सपीरियंस का लेयर. वो लेयर जो हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं. सो द गेम्स दैट वी प्ले, जैसे अगर आप सबने माइनक्राफ्ट खेला होगा या पबजी खेला होगा या बीजीएमआई, या अभी जो बैन हो गया, बट सीओडीएम खेला होगा, ये सारे मेटावर्सेस हैं. ये सारे सोशल एप्लीकेशंस है गियर टुवर्ड्स द कॉमन सोशल एक्टिविटी, फन. तो ये सारे जो मेटावर्सेस है ये फन के लिए बनाए गए, राइट. तो ये सारी जो लेयर है जहाँ पे आप इनसे इंटरेक्ट करते हो, वो एक्सपीरियंस जो आप लेते हो, वो एक्सपीरियंस की लेयर है. मेटावर्स इज अ जनरल टर्म, आयुष. इट्स नॉट डिराइव फ्रॉम द कंपनी मेटा. मेटा ने एक्चुअली बहुत सॉलिड मार्केटिंग गेम खेला है और पीआर गेम खेला है. सो फेसबुक वांटेड टू रन अवे फ्रॉम लॉसूट्स, क्योंकि फेसबुक इस ऐप पे और फेसबुक इस कंपनी पे, दोनों पे दन के केस चल रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, कंपनी का नाम ही हटा के मेटा कर दिया. तो अब केस किस पे करोगे, फेसबुक ऐप पे करोगे या फेसबुक कंपनी पे करोगे, क्योंकि फेसबुक कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो ये गेम खेला जा रहा है बेसिकली. ये मार्क जकरबर्ग भैया बहुत स्मार्ट है. इज नॉट दैट तो इतना इतना आसान नहीं है, बट या सो दैट्स एसेंशियली व्हाट मेटा इज ऑल अबाउट. मेटावर्स इज अ जनरल टर्म. मेटावर्स इज मोर ऑफ अ मार्केट टर्म. यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने मेटावर्स को काफी बड़ा बना दिया, बट मेटावर्सेस हैव बीन देयर सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो अगर आपने बचपन में आपके बचपन में अगर वो पोकेमॉन गेम्स खेले होंगे ना अपने कंप्यूटर पे, वो पोकेमॉन फायर रेड लीफ ग्रीन आते थे, आई वाज अ बिग फैन ऑफ दोस गेम्स. तो वो गेम्स अगर आपने खेले होंगे, दोज वर आल्सो मेटावर्सेस बेस्ड अराउंड द एक्सपीरियंस ऑफ पोकेमॉन. कि आप एक ऐश केचम या जो रेड वो कैरेक्टर होता था उसके अंदर जाके आप वो वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन में खेलते थे, फाइट जिम्स एंड फाइट द पोकेमॉन लीग एटसेट्रा. दैट वाज अ मेटावर्स अराउंड दैट वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन, राइट. जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो माइनक्राफ्ट खेला हम लोगों ने. माइनक्राफ्ट इज आल्सो अ मेटावर्स बिल्ड अराउंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑफ माइनक्राफ्ट. इसी तरह से अभी जो मेटावर्सेस है, जो मेटा बना रहा है, मतलब फेसबुक बना रहा है, वो भी एक मेटावर्स है दैट इज बेस्ड अराउंड सोशल एक्सपीरियंस. सोशल हब है वो एक तरीके से. सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट लूमोस इज डूइंग विद मेटावर्सेस, राइट. So what Lumos is doing? Lumos is building the Lumos metaverse, which is a metaverse for developers and builders like you. So आप जैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे डेवलपर्स, एंथुजियास्ट इन टेक्नोलॉजी, ये जो है ये एक Web3 इकोसिस्टम के लिए बनाया गया मेटावर्स है जो हम करंटली बिल्ड कर रहे हैं. So we've recently raised funding. We've recently raised pre-seed round $1.1 million
and we're building an MVP of a metaverse that is built for Web3 enthusiasts and developers. तो आप जैसे लोग जो Web3 वर्ल्ड से इंट्रीग्ड हैं, जो इस दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हो सकता है आप इस करियर इसके बारे में और सीखना चाहते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स की चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या अगर आपके पास सब नॉलेज है और आप अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको फंडिंग की जरूरत होगी, एक्सेलरेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें एक सोशल एक्सपीरियंस के बनाए जाने का काम हम लोग लूमोस मेटावर्स पे कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा बहुत जानना है, तो आप इसका डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करना। आई हैव गिवन द लिंक टू द डिस्कॉर्ड सर्वर इन द चैट। I'd request Atharva to again post the chat link of that Discord server in the chat, so that अगर आपको ज्वाइन करना है, इसके बारे में और जानना है, बिकॉज हम लोगों ने अभी इसका एक वाइट लिस्ट लॉन्च करना है कुछ दिनों में, जहाँ पे लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट वाइट लिस्ट, आप इस प्रोडक्ट के अर्ली अडॉप्टर्स बनेंगे। यू विल बिकम द फर्स्ट अडॉप्टर्स ऑफ दिस मेटावर्स, फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस मेटावर्स, जो इस मेटावर्स में हमको बताएंगे, अर्ली प्रोडक्ट में बताएंगे कि क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसा ये करना चाहिए, सारी चीजें करेंगे। तो यू विल बी द की पीपल फॉर अस देयर, यू विल बी आवर अर्ली अडॉप्टर्स हेल्पिंग अस विद दैट प्रोडक्ट। एंड ऑब्वियसली बिकॉज यू आर द अर्ली अडॉप्टर्स, विल ऑल्सो हैव अर्ली बेनिफिट्स हियर। तो जो भी अर्ली ग्रांट्स मिलेंगे इसमें, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स होंगे, स्टडी ग्रांट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, वो भी सारी चीज़ें इसमें ऐड किए जाएंगे। एंड yes, Tanmay will obviously cover this in his session, जहाँ पे अगर आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो कैसे करते हैं वो आपको दिखाएगा, अगर आपको डिफिकल्टी जा रही है उस चीज़ में। अगर आपको करियर्स एक्सप्लोर करने हैं, तो ये टाइप के करियर्स होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ करियर्स दैट आर देयर। ये काफ़ी सिमिलर है आपके एक फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल से, बट देर आर सम स्पेसिफिक रोल्स, लाइक जैसे ब्लॉकचेन डेवलपर। तो अभी तक जो फंडामेंटल्स हमने कवर किए, इतने फंडामेंटल्स आपको समझते हैं और आप एक टेक्नोलॉजी में मास्टर है। जैसे अगर आप सॉलिडिटी समझते हैं, you understand smart contracts, you can develop smart contracts, you're a blockchain developer. Now this blockchain developer is a very very crucial addition to any web3 company, क्योंकि ये blockchain developer इनके smart contracts को बनाता है, ऑडिट करता है, मेंटेन करता है, सारी चीजें करता है। So this is one career option that you can take. There are network engineers. अब एक network based blockchain चलाना है तो network engineer तो लगेगा ना भाई, तो network engineer is a role. Engineering leads, obviously हर product company में, हर project company में engineering leads होते हैं जो एक engineering team को head out करते हैं। नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैं रिप्लेस करूंगा फुल स्टैक इंजीनियर्स से, जिनको फुल स्टैक डेवलपमेंट समझ में आती है, राइट? वी हैव जस्ट क्रॉस द 1 hour mark. I know you guys must be tired with the bug that I'm doing, but bear with me. There's rewards for you in the end. सो नेटवर्क आर्किटेक्ट, अब एक ब्लॉकचेन को स्क्रैच से अगर डिजाइन करना है, एक ब्लॉकचेन की वल्नरेबिलिटीज अगर जाननी है, तो नेटवर्क आर्किटेक्ट बहुत क्रूशियल होता है, राइट? तो ये नेटवर्क आर्किटेक्ट जो है, ये उस नेटवर्क को डिजाइन करने में, उसकी वल्नरेबिलिटीज चेक करने में और उसको पैच करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एंड देन देयर, इफ यू आर समवन लाइक मी हु इज वेरी बिग टेक एंथुसियास्ट, बट कोड करने में उतना मजा नहीं आता है, सो यू कैन explore the other side of engineering. So I am an engineer myself, but you can explore other side of the non-technical career side in Web3. So the one common way is community managers. So people like Tanmay and me, we are community managers. We help manage these big communities of Web3. We help manage and build these communities. There are product and project managers who can help you manage these products. जब product build होता है, तो प्रोडक्ट की सारी साइकिल्स मैनेज करना, उन प्रोडक्ट के अलग अलग फेजेस को डेवलप करना, उसको मेक श्योर करना कि वो टाइम पे हो रहा हो, ये सारा काम प्रोडक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं। डेवलपर एडवोकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मुझे डेवलपर्स में अडॉप्ट करानी है, सो आई कांट अडॉप्ट इट विद द नॉर्मल मेथड्स, आई हैव टू use developer advocates to do that, right? Then there is marketing coordinators, people working in the field of marketing, and then there is content writers and technical writers, right? These people are responsible for writing technical stuff, writing content stuff on these platforms. तो ये सारे जो है करियर्स हैं, बट अगर आप इसमें आप पहली पहली बार आए हैं, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, अगर आप पहली बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, so this is the link to the same Discord server that we've been sharing on the chat. So you can scan this QR code also if you guys didn't find the link in the chat, and come to the Discord server, and we'll basically have sessions. We have sessions almost every week on the Discord server talking about various aspects of this technology. Atharva has been a part of this community for a long time. He'll attest to that. We've been doing a lot of sessions जहाँ पे हम लोग ऐसी सारे इवेंट्स करते रहते हैं। हम बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक्स तक, थियोरेटिकल सेशन से कोड अलोंग सेशंस तक, हैकाथॉन से लेके प्रोजेक्ट सेशंस तक हम लोग सब करते रहते हैं। तो अगर आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, यू कैन कम जॉइन अस विद दिस QR कोड. देयर आर आल्सो रिसोर्सेज फॉर यू टू लर्न ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन मोर डेप्थ.
all of this is for free, obviously. You can also, there's an opportunities chat where you can explore opportunities. तो अगर आपको लगता है कि अब आप काफ़ी सीख चुके हैं, अब skills आजमाने का time आ गया, so you can go to the opportunities chat, explore some of the opportunities there. You can apply for jobs, internships, और even get grants. So हम लोग काफ़ी grants की information, bounties की information देते रहते हैं, जो आप information वहाँ पे जाके verify कर सकते हो और आप grants और bounties के लिए apply कर सकते हो, right? With that, hold on. We come to the end of the session, and thank you for inviting me. मेरा सेशन खत्म होता है यहाँ पे. Now we'll take some questions. I'll take 2 or 3 questions if you have any about Web3, about crypto, about blockchain, जितना भी हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं. So after that I'll hand it over to Tanmay. Your comments section में अपने chat में सवाल डालो guys, and we'll take a few questions. There were a few interesting questions back there. Guys, any questions? Thank you, Aishwarya. Thank you for inviting me. So I think it was is government supporting Web3? So अभी जो government का stance है on Web3 and crypto in general is kind of ambiguous. So government addresses कि हाँ ये जो है ये जो crypto का world है, it's a taxable asset. So it's an important asset, इसलिए उस पे 30% टैक्स लगता है crypto पे, हर crypto asset पे, और हर transaction पे 1% TDS कटता है. So अगर आप उसको centralized exchanges KYC के साथ करते हो तो 1% TDS भी लगता है. तो वो अग्री करते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट एसेट है, बट उसको पूरी तरीके से अभी वैलिडेट नहीं किया गया. बट good sign is that Indian government is trying to understand this technology very closely. So I've recently met someone who is the policy advisor to the Ministry of Information and Technology, जो इंटरनेट पे मतलब प्राइवेसी बिल जो अभी वापस लिया गया, जो हमारा डेटा प्राइवेसी लॉ जो है उसको वापस लिया गया, रोल बैक किया गया 2019 के अमेंडमेंट पे, और उसके साथ जो क्रिप्टो बिल है उसको भी रोल बैक किया गया जो 2021 में इंट्रोड्यूस किया था. उनका जो एडवाइजर है उनके साथ में अभी मिला था, तो वो वही बोल रहे थे कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस एंड दे आर एक्चुअली एक्टिवली वर्किंग ऑन बिल्डिंग सम फ्रेमवर्क जहाँ पे क्रिप्टो को और वेब3 को इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी बिग हॉटबेड फॉर वेब3 रिलेटेड इनोवेशन. पॉलीगॉन जैसे अगर आपको मालूम होगा, पॉलीगॉन एक इंडियन स्टार्टअप है जो अभी तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बाहर मूव कर दिए, बट पॉलीगॉन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेब3 startups. It became a $1 billion startup like overnight. Matic is like one of the most widely used layer 2 blockchains, और all of that is because वो एक इंडियन बंदे ने बिल्ड किया है. तो अगर आप if this is something that makes you happy, Indian government is actually working on crypto regulations that can help more crypto adoption. So that is something I've heard about. Thank you, Siddesh. I hope that you loved it. Ayush, yes, the Apple passkey question. So the thing is, I don't know what is the inherent technology. I'm assuming that it's some kind of private blockchain because the way they are. So every company is trying to get rid of passwords. Okay, Google is trying to get rid of passwords with their own unique way. वो two-factor authentication को ही उनका password बना लिया उन्होंने. If you know कि अगर आप Google sign in करने जाते हो तो आपको एक कोड भेजता है आपके मोबाइल में, तो आपको वो कोड टैप करना पड़ता है. उसके बाद आप लाइक आप अपना गूगल अकाउंट एक्सेस कर पाते हो पासवर्ड डालने के बाद में. सो ऑल कंपनीज, इवन इंस्टाग्राम, इवन लाइक ट्विटर, एवरीवन इज ट्राइंग टू अवॉइड हैविंग पासवर्ड्स बिकॉज पीपल आर स्टूपिड. आई एम सॉरी बट पीपल आर स्टूपिड. लाइक आज भी लोग QWERTY 123 पासवर्ड रखते हैं, आज भी इस डेट में भी उनको मालूम होने के बाद भी दिस इज लाइक द easiest to hack password. या लोग आज भी अपना नाम, नंबर, कुत्ते का नाम, बिल्ली के बच्चे का नाम आज भी उसको पासवर्ड्स में रखते हैं, राइट? तो मतलब इतना होने के बाद भी लोग बेवकूफ हैं, ये कंपनीज को मालूम है. और जब ये डेटा हैक होता है तो ये सारा ब्लेम कंपनीज पे डाला जाता है कि भैया आपने अपना सिक्योरिटी बराबर नहीं रखा था, कंपनीज ने रखा था, आप बेवकूफ हैं. तो ये जो लोगों की बेवकूफी है, इसको अवॉइड करने के लिए ऑल कंपनीज आर ट्राइंग टू लाइक गो विद द पासवर्ड. तो उसके लिए एप्पल पास की लाया गया है, बट इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस. बाय द वे, इफ यू लूज योर एप्पल पास की, ओ माय गॉड, आई हैव डन दिस विद माय मैकबुक. एक बार गलती हो गई मेरे से, भाई भगवान का भी बचाए मेरे को, इससे कभी नहीं होना चाहिए. सो इट्स लाइक अ वेरी डाइसी सिचुएशन वेयर जहाँ पे यूजर से कंट्रोल लिया जा रहा है, बट उन्हीं की अच्छाई के लिए ये करना पड़ता है कभी कभी. बट थैंक यू शनाया, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द सेशन. सर्वेश, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Aishwarya.
If you guys want to connect with me, obviously you can connect with me on Discord. I'm there by the name Nikhil, or you can connect with me on. So on the last slide that I presented, I had my uh, Instagram handle and my LinkedIn handle. That's the same, Nikhil underscore Aparajit. That's NIKHIL underscore APARAGIT. So if you want to connect with me personally, you can connect with me on LinkedIn. That's the best place to interact about professional stuff. अगर ऐसे ही बकचोदी करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे बात करेंगे. But thank you so much for inviting me. I hope you guys got some immense value out of this session. I hope you guys understood what the whole uh, Web3 jargon world is, and let's connect on a one-to-one basis and maybe build something crazy. So with that, thank you so much. I'll give the stage to Tanmay. Hey Hey, guys, Tanmay. I'm audible. I'm Yes. audible. I'm visible. Some of the things that you have to say when it's virtual meet. I have this joke where most of the time virtual meets are people saying, "Hey, I'm audible," and everybody is silent, and then asking them again, "I'm audible," and then everybody is silent, and then suddenly someone in the meeting says again, "Yes, you're audible," and you again ask it. So, anyways, the session is not over. We have couple of things. We'll be playing a quiz where top three folks would get into the metaverse T-shirt, the T-shirt that I'm not wearing. Nikhil was wearing that one, I guess. So, yeah, can you just show Nikhil to see folks that which T-shirts that are they gonna get? The winners will get This this one. T-shirt. So this is an Uh, exclusive into the yeah, metaverse t-shirt. This t-shirt is up for grabs, by the way. yeah. We have other special t-shirts. Uska giveaway Discord server pe hota hai. So we have a quiz on every Thursday, and we have like exclusive rewards on the quiz for every winner. So if you are like interested in these swags, come onto the server also, and also wait along for this quiz. Okay, so if you finish this quiz on time, there's some rewards for you. Yeah, the three winners get Lumos exclusive T-shirt. But this is what Nikhil covered in his session, which was about Web3. That how you can get into the space, how you can learn more about the Web3. He almost covered the basics that you need to learn about Web3. But I'm here to tell you guys a bit more about how can you utilize Discord server to learn more about Web3, as well as not just learn more about Web3, but also utilize it and get opportunities in Web3. Earn earning opportunities. Obviously, everyone wants earning opportunities. So I'm just quickly gonna share my screen. I've seen a lot of folks have joined in on the Discord server, but weren't able to um, verify themselves. So I hope my screen is visible. This is the session that is happening right now on the Discord server. It's mostly about the friendship, since friendship day is around the corner. I can see a lot of folks who have joined in. So Devaki has joined, Prashant has joined, Taskmaster has joined, Kaveri has joined, but none of you are verified, and that's why you aren't able to see all those channels which are here. There is a session going around on the Discord server as well. So all this access of general chat, talking more about Web3, recruitment chat where you can post your resumes, or HR personally moderate your resume, opportunity sections where you get a lot of opportunities related to Web3. All of this won't be accessible if you aren't verified onto the server. And this is something that you'll see when you join the server. All you have to do is click on verify here. There would be a screen where you have to sort of sign an agreement and say yes. So you can read it if you want to, but this is what agreement consists of: treat everyone with respect, no spam or self promotion, age restricted, and so on and so forth. You guys can read it whenever you want. All you have to do is click here. You have to react onto this message. As soon as you react to this message, all of the channels would be visible to you guys, like SCW channel, a Web3 conference channel, a recruitment channel, resume channel. So these are pretty important channels, because if you want to get in this space, you need to have right resumes, you need to have right mindset, you need to be connected with a lot of communities out there, because most of the Web3 ecosystem is sort of community centric. If you're a part of a community, you have a higher chance of getting into a space, getting into a company, earning more bucks. Like Nikhil said, there's like a good company for Web3 developers out here, and I can see a lot of folks who have joined in. Ambrose just joined in, Kaveri, Taskmaster. You have to be verified. Divya just got verified. So make sure you go to this is the first screen. I just request Atharva to pop the um, Discord server link, so that when people join in, they know how to navigate into the Discord. Go to verify here and react to this message.
Once you react to this message, there will be a screen that pop. You'll have to sign in again. If these channels are not visible, react to this message again. Once you react, you can go to the introduce yourself channel. Introduce yourself. Like, there's a lot of people introducing themselves. Most of them are from Web3 field, and very experienced folks have joined in this Discord as well. So if you have any questions, go to ask the expert channel, which is here. So all of the coding questions that you have. So many folks have a lot of questions related to Web3, Solidity, Rust. You can ask here. If you just want to learn more about the basics of Web3, like Nikhil did the session about, you can go to learn the basics. We usually put out a lot of articles here as well. um, this message is pretty important for you to learn about blockchain, understand, and also the free resources around the blockchain. So this is how you navigate. I hope I was clear with the factor. Make sure you join the server. You'll get to learn a lot, and not just learn a lot, but you'll actually get a lot of opportunities in the field of Web3. 18 members from the community are eligible to go to Goa for a Web3 conference that is happening on 11th, 12th, and 13th. And 14th apparently. So there's a cruise party and everything. So it is going to be pretty much fun, and we really want more people from our community to go to more Web3 conferences. Like Goa, there's another conference happening next month of Solana, which is in Delhi. So we do send our community folks out for the Web3 conferences outing in the different states, and we really push them. So those are some of the perks that you just get. But other than that, just to learn more about Web3 is something that you can do on Discord. So I hope we are clear with how to get verified. With that being said, we are off to that quiz. We'll be playing a quiz. There's like a 20-question quiz from the session that Nikhil took. You have to answer it, and top three folks will apparently get Lumos exclusive T-shirts. So I'm just gonna quickly send the link to Atharva. He'll be sending it to the chat. Once that's done, you guys would be able to get an access of the quiz. Just give me 1 second on that front. Yeah, all right. I'm just gonna send it on private chat. Atharva, you can roll it out. So here are the rules. You'll be able to see my screen, the leaderboard. Make sure you join in from your Discord username. Because the winners will be announced on Discord itself. So top three winners will get Lumos exclusive T-shirts. You'll have to send address and everything. Will ship everything to you. You don't have to worry about anything. No money charged, obviously. Questions will appear on your mobile phone if you're joining from your mobile phone. Options will be there as well. You'll get apparently 10 to 20 seconds for each questions. Everybody knows how to Google it, and we don't want people to Google stuff. So that's why I can see a lot of folks have joined in. I can see Janvi here, Ruchita here, Sanju here, Aishwarya here, Purnima here. Mr. Cool is here. Mr. Cool is from the Discord server. Uh, Hello, I'm audible? Yeah, I guess I'm audible. Cool. So Mr. Cool is here. Mr. Cool is from our Discord server. Sarvesh Joshi is here. Pranjali is here. I can see 20 folks have joined in. We have more folks in watching, right? So come on, guys, join in as quickly as possible. Um, 21 folks have joined in. I'm just gonna wait for 30 more seconds, and then we're gonna start this quiz. Um, I'll share my screen so that you guys know what's happening. Okay, give me 1 second. Here we go. So this is what the leaderboard looks like. We have 24 folks have joined in, and I can see more people joining in. So I'm just gonna wait for 15 more seconds before we start the quiz. You'll get 20 questions to answer. Make sure you're rapid as you can be. Here's something about the quiz. Okay, so I've been hosting quiz from like a month or two, and there are crazy comebacks. So never think that you've won it. Make sure, even if you have gotten like 10 wrong answers, I've seen an insane comeback, like 10 straight correct answers gotten him to the top one position. So never lose hope on this quiz. I'm telling you guys, I'm banking on you guys. So make sure everything is sorted. Make sure you have your calm composure. This gets very nail biting at the end. So have the patience,
keep rocking. I'm sure you have attended this session, so everything related to the questions are related to this session itself. I'm quickly gonna wait for 15 more seconds, and my screen is visible, right? My screen is visible, I hope. I'm just gonna wait for 15 seconds, I guess, because I can still see people joining, and I don't wanna waste time, but I don't wanna I don't want people to not join this as well. So shall we begin? I need to see a lot of yes on the comment section. Let me know if we should start. Let me know. Are you guys ready? Are you guys ready for the blockchain 101 quiz? I still can't see a lot of comments out here. Oh, okay. You guys are ready. You guys are fighting. Let's join. Let's start. 3, 2, 1. Let's go. All right. So, assuming you can see the leaderboard, 37 participants. Mr. Cool is leading as of now. Nobody's leading. Is everybody's on first. As the quiz go along, we'll see a lot of people climbing up, climbing down. As I said, never lose hope. You never know when it's your turn. Get 12 to 15 questions right, and you're off to the charts. You're gonna win the Lumos exclusive T-shirt. So never lose hope, guys. Ambrose is joined. Sanju is up. Bhakti is up. Rishikesh is up. Guys who are leading off the chart, don't be overconfident, because you never know who is hunting you down in this game. So be patient. One question at a time. One right question at a time, apparently. Sanjay is leading, Raj is there, KD is there. I hope you guys have given your Discord username, because it will be easier for me to recognize you on the Discord, because the winners will be announced on Discord and Discord itself. So the team will be reaching out to you on Discord. Everything happens on Discord. So it's a very Discord centric community as of now. So all the fun stuff happens on Discord. So make sure you join a Discord server and be part of more such quizzes. It happens every single Thursday. So KD is off the chart. He has 4 correct questions, answered correct 4. Sanju is answering more quick. Oh boy, he's on 6,260 points. The second is on 4,480 points. So Sanju is killing, KD is killing, Ambrose is killing right now. But guys behind, Ashish, Ruchita, Shruti, Ayush, Nitin, don't lose hope, because I have seen some crazy comebacks happen. So you never know. All it takes is like 7 or 8 correct answers at the end to just switch it off. It's all about the comeback, guys. It's all about the comebacks. I'm telling you. I think the comment section must have gotten silent by now, because everybody would be busy playing quiz. So I'm not gonna ask you guys to comment. So yeah, that's that. Sanjay is leading. KD has gone down. He has gotten like two to three wrong answers as of now. Don't lose hope, KD. You can back it up, man. Sarvesh Joshi has joined top 10 position. Sanju is leading the chart. I think Sanju was pretty attentive in your session, Nikhil. He was pretty attentive. Ruchita is second. Ambrose is third. Pranjal is climbing up. Ayush is climbing up as well. So it's a hasty fight between top. It's a hasty fight for top 3 position. All 3 positions are gonna get Lumos exclusive T-shirts shipped right to their homes. All you're gonna need is your address and a mobile phone. So you have everything to win here and nothing to lose. All you have to keep is patience. Sanju is leading. Ambrose, Rucha, you can climb up as well. You can get to top 1 position. We have like 20 questions to answer, right? So Sarvesh is climbing, Ayush is climbing, Pranjal is climbing, Kalash is climbing, Taskmaster is coming up as well, Bhakti is climbing as well. So let's see who's winning this, man. Let's see who's winning this. We have 42 players playing. So usually this quiz goes for like a lot of time, but we're not gonna wait for that. We're gonna wait till 8:26, apparently 4 more minutes, and then we're gonna wrap the quiz up. So till 8:26, whoever is leading the quiz, whoever is in top 3 till 8:26,
wins the quiz, guys. Wins the quiz. Gotta be you gotta be fast and you gotta buckle up then. The timing 3 more minutes for quiz to be closed. Uh, no matter how many questions you're attempting, till 8:26 is the time you have. So make sure you count it. Make sure you're rapid. Make sure you're fast. Sanju was leading from the start, so I don't think there's anyone coping that up. But you never know, right? Taskmaster has climbed up, so he was so much behind, man. KD, I can't see KD here now. KD was leading the chart for so long. KD was there. Sarvesh has joined. Sarvesh was just a 9th or 10th position before he got 7 questions right. So I'm telling you guys, you never know who's coming after you. Sanju, you can't be with the piece that you're number one because you never know. You still don't know. Forty-two players, 3 winners. Who's getting this one? Who's getting this one? Ambrose has climbed. Sarvesh is on 3. We have 2 more minutes. Ayush has climbed up. Aishwarya is climbing up as well. Ayush is on 3. Kalash is coming up. Ambrose has gone down. What happened to you, Ambrose? You got to buckle up. Advait is climbing. Aishwarya is climbing up with 3 streak. Uh, Sanju is over with his questions, if I'm not mistaken. Sarvesh is over with his questions as well. No, he's still there. Sarvesh has gone to 4th position. Ayush is up. Kalash is up. So there are new top 4 winners here. Sarvesh is on 5. Ambrose is on 6. These folks were leading a minute ago. So, like I said, you never know what happens in this game, right? So, Taskmaster is up, Ayush is up. It's a hasty fight. It's a tough fight between 2 and 3. All of them are going after Sanju for the top 1 position, but I don't know who's gonna take it. Kalash and Sarvesh still have time to get into top 3. Ambrose has the time to get into top 3. All you need is a couple of more correct answers. Carry Cool is climbing up with 8 streaks, so that's awesome. That's awesome. Sarvesh is climbing up as well. Last 1 minute, guys. So at 8:26, the quiz is going to be over. The quiz is going to be stopped. I'll be declaring the winners on Discord server. So I'll stop screen sharing on 8:26 sharp, which is in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I've taken the screenshot and I've stopped sharing. Can we just lower down with the music? I know the winners. I'll declare it. I've taken the screenshot, so you'd be able to see the screenshot timing as well when I post it on Discord. So there's no fluctuation happening or no cheating or sorts happening. Um, Winners will be announced on Discord server. I hope the session that Nikhil took was important. You got to learn a lot of things. I hope quiz was fun as well. Um, I can see like a lot of folks still playing, but I'm sorry, you guys. That was it. I mean, even if you weren't able to finish this quiz, that's not a problem. On Thursday, we play quiz every Thursday. So there's always a new quiz. You get Lumos T-shirt or probably a different fun that happens on the quiz. So I hope this was fun. Ashish, don't worry about it. You have next Thursday for the redemption. Every Thursday, there are a bunch of folks that comes onto the Discord server, and we play this every Thursday at 7 p.m. So next Thursday, I really want to see some of you folks joining in as well. Thank you for joining. Thank you for watching. See you on the Discord server. If you have any questions related to Web3, you can ping me. Or Nikhil. This is my username on Instagram, LinkedIn, even on the Twitter, even on the Discord server. So if you want to connect with me about Discord,
if you want to connect me about with the for the opportunities, giveaways, and the quizzes, you know where to find me. This is my username, and please join Lumos community. We'll see you on Thursday for a quiz day Thursday, where you never know, you might win a T-shirt of Lumos, or probably a meal of pizza and Coke, all from us. So you never know what's the prizes. See you there. This was fun. I hope the Nikhil session was fun as well. The winners will be announced in 1 hour on Discord Community Achievement Channel. So whoever played the quiz must join the Discord server right now. And if you have any problems getting verified onto the Discord server, ping me on any other social media platform. My username is Tanmay30. I'm just gonna put it out on channel as well. You can also reach out to Nikhil for that matter. That's the wrong one. Shit. Wait. I'll put out. Patience is the key, like I told you guys. So this is the original username that I have. See you guys. This was fun. This is Tanmay30 and Nikhil Aprajit signing off.